General Rajiv Narayanan. Rajiv, welcome. Thank you, sir. Namaskaram. Welcome. Jai Bharat. Thank you for getting me back on the show. And it is a very, very interesting show, sir. Yeah. It, the topic is very interesting. Not only interesting, it is very valid as we discuss. We'll get to know that Yeah. there are reasons to be concerned because it happens in our neighborhood. We already I have something going on one flank, and if something starts happening to the north, then there are reasons to be worried about. yeah, I completely agree with you. मैं जो जितने यहाँ हमें सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, जनरल नारायणन ने ये टॉपिक चुना, राइट, और मैंने कार्टून बनाया, ठीक है ना? और रोमांचक इसीलिए है क्योंकि ये नॉर्मल सोच के विपरीत हम बात करने वाले हैं आज। नॉर्मल सोच के विपरीत ही नहीं बात करेंगे आज। कल जो हमने जनरल राज शुक्ला से बात किया उसके विपरीत होगा। बात यह है कि इसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, पर जब तक हम एक चीज के दो पहलू या तीन पहलू या चार पहलू नहीं देखेंगे, हमें खुद एक वैल्यू जजमेंट लेने के लिए मुश्किल होगा कि हमारा रास्ता क्या होगा आगे। The importance is that unless you see a point from 360 degrees, right, you will not get a clear view that it is possible that Mr. Xi Jinping doesn't have his pants. Right. Okay. Just to put things in perspective, okay, मैं सबको बताना चाहता हूँ what are the drivers of change in China. ये जो ड्राइवर हमने दिखाया आपको, this is something as part of a talk I had given last year to all the commanders along the LAC. Right, I went to Delhi, all these people had come down, and I explained to them how these things are going to change China. What are the drivers at that time when zero COVID was at its peak? It was zero COVID itself. Infrastructure and big technology, it has not gone out. It has taken a funny turn. In the midterm, my two big drivers, which I had identified, were the military and Xi Jinping, and they have not gone anywhere. In fact, they've been reinforced. And then, of course, in the long term, I had identified climate change and demography as the big, change drivers of China, and they remain. But आज के दिन हम Xi Jinping के बारे में बात करेंगे, right? Xi Jinping is the area for focus. I will give you one, idea of it, but I think the larger idea, General Narayanan will give 2 minutes more. Okay, at that time when I spoke to all the commanders, मैंने इनका एक चरित्र का स्केच बनाया, और ये मोटे मोटे तौर पर ये क्या है? Xi Jinping is a dyed-in-the-wool communist who is of the Mao-Marx lineage. उसके 3 एम्बिशन है, 3 मुद्दे हैं, 3 इरादे हैं, 3 कॉब हैं, राइट? ये मेरे को नहीं पता है ये 3 कॉब क्या हैं? He should be the greatest of all Chinese leaders, make China an unquestioned superpower, and perpetuate communist rule in China. ये जो Xi Jinping के सुनारी लाल के हसीब ख्वाब है, राइट? हसीन ख्वाब जो पहले आते थे। यहां तक इसके एम्बिशन इतना है कि he has already written the history of his rule last year, and officially it has been published. Okay, what is this China dream? इसका China dream यह है: state control, hard military power, strong economic power, dominating great power relations. That is, China will be dominating great power relations, and he wants to establish a Sino-centric global order. What are his watchwords जिसके बारे में हर वक्त बोलता रहता है? पिछले 10 साल से जो इसके जो वॉचवर्ड्स हैं वो हैं
Sinification of Marxism, anti-corruption campaign, common prosperity, victory over COVID, a new model of win-win cooperation, greatest military of earth, strong military in a new era, dual circulation, revenge on the century of humiliation. Right? आजकल वो डेवलपमेंट ऑफ फॉर कॉमन मैनकाइंड भी बात करने लगा है, पर मेरे हिसाब से और बहुत फॉर वेरी डीप रूटेड इश्यूज, माय कन्विक्शन is that Xi Jinping is China's fundamental ailment, and about which General Narayanan will have his own view, right? For or against, we'll see, because I don't want to trip it. And मेरे हिसाब से, his model will ensure that China will decline and be at odds with the world at large. ये कभी दुनिया में शांति, जब तक ये है, दुनिया में शांति नहीं होगा, राइट? So this sets the whole story कि क्या जी जिनपिंगिज्म सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो किस तरीके से करेगा, और करने के लिए क्या चाहिए, राइट? इसके साथ मैं I'll give way to General Rajiv Narayanan. He will go through, and he will go through his presentation which is made. It's a very thoughtful presentation. Okay, over to you, Rajiv. Thank you, sir, for giving that platform. And yes, I agree with you that as on date today, the problem is Xi Jinping as far as CPC and China is concerned. And in my own honest opinion, he may have been a compromise candidate, because earlier people had spoken about Bojilai, who was to be the head of Chongqing, who would have been the president. But I think he became too big for his boots and they had to cut his wings. And he must have been chosen. I take a classic example from our own history in the 60s, after our Honorable Prime Minister Lal Bahadur Shastri suddenly passed away. Indira Gandhi was a compromise candidate, and look at how she sorted out everybody else within the Congress. Same, I think, is the case with CPC is facing with Xi Jinping. He was the compromise candidate imposed on people, say by Chiang Zemin. And look at how he has sorted out all factions, whether it be Princeling or the Communist League faction or whichever faction is existing. He just sorted everybody out today. And today, he appears to control everything in China. There is no aspect that he doesn't control, because latest 20th party mein internal security apparatus also, which used to be with the state council, is brought under himself. And if you look at the Politburo standing committee, you don't feel confident, because none of them have any experience on any governance except his loyalty to him. Yes. And that, like I was mentioning before we started, you have a problem on the west, and if you start having a problem to the north, both people have it in their DNA that when they face with internal problems, they strike out, They externalize externalize it. And that is the reason why we need to be able to analyze this. It is not necessary that it may happen that way, but if you're prepared for it, you'll not be caught by surprise. It is something like what late Sundarji had written, that book, The Blind Men of Hindustan. Yes. Each one is touching the elephant, but he's touching different parts of elephant. So he comes out with a different perspective. Somebody is touching the trunk, somebody is touching his foot, somebody is touching the body, somebody the ears, somebody the tail. In the same manner, like you had mentioned, you need to touch on this aspect in a 360-degree perspective, and then compose the whole to arrive at what exactly it is, and not look at one perspective only and go down that route. Yeah, You may go wrong. I agree with you. You may go wrong. Look, the whole idea is to accommodate different viewpoints and come to a base minimum as to say, look, this is what it is. You might have a maximalist ceiling,
You might have a minimalist outlook, but you need to have a balanced outlook as to how you have to deal with China. Correct. That is something like when you do a net assessment, so that you Correct. can arrive at your basic core and the hedging strategies. Otherwise, I you'll agree. go wrong. I agree with you. So, if we can move, Yeah. so basically, today you find that Deng Xiaoping had given a particular way for China to rise, which his next two, I would say, proteges, Chiang Zemin and Hu Jintao, followed. Xi Jinping has torn it up in the dustbin, and he has given out his own, charted his own course. So we'll just have a look at what those two strategies are and how they go forward and what it is. If we can make it big, it will be Yeah, easier I'll do that. I'll do that. to read. Yes. Now, when you look at, there were 24 strategy, a 24 character strategy. We only look at Tao Guang Yang Hui. No, it was a part of that 24 characters strategy to lie low, uh, hide your capacities, bide your time. So the 24 character, and he has also now, after the 20th Congress, given his 24 character. He has not changed to 20 character or 26. He has also kept 24. And it Why shows would a that mind, be? psychological bent of mind, that I have to be better than them within the same framework that is being given. And this emerged after the Deng Xiaoping emerged after the Tiananmen crackdown, and he needed to look at how to protect their interest. And so he said, observe calmly, secure your position, cope with the affairs calmly, which you found they did when in the Yugoslavia war, there in Belgrade, their embassy was targeted. Said, hide your capacities, bide your time, and be good at maintaining a low profile, never claim leadership. People who have been given access to his all his speeches, like one is Michael Pillsbury, Kissinger, they've all been given. They claim that he had said it would take them 100 years to be able to reach a level, the comprehensive national power which he had enunciated in 85. It will be so strong that then you will be able to assert yourself, and that the fifth generation, which is Xi Jinping, in his second term, which was his last term, should order a commission to assess, are you behind time, are you ahead of time, what time will it take. So when you take 100 years, it is not 47 to 47, it is actually 85 to 2085. That is the cycle he had given. But after the 2008 Lehman Brothers financial crisis, which hit global crisis, Xi Jinping and his Yang who are the hardliners, started thinking that their time had come, and that West is on the decline. But it took him till March 2023 for his 24 character slogan. And what does he say? Same. First, he says, be calm, keep determined, seek progress and stability. But it is the fourth one, which he had already enunciated earlier, fanfare your way. Be proactive and strive to achieve things, which is different from Hide maintaining a your. low profile. You are out striving to achieve something, that means you are coming in the limelight, you're going to become aggressive. Unite under the banner of the party, that it has to be, everything has to be under the party. And when it is under party, means it's under Xi Jinping, and dare to fight. Now, this is the most dangerous aspect, Yeah. aggressiveness. He's Yeah. changed from not hiding your claws to openly bearing your fangs, and which was very evident in the Wolf diplomacy and all his actions on our LAC and in South China Sea. You So, know, I want to bring out something. This dare to fight. In 99 2000, I was doing the high command course, and my dissertation was China, on China. And I read this great quote by Deng Xiaoping. He said, avoid war. If you can avoid war for 25 years, avoid war for another 10 years.
and another 10 years, and another 10 years. As you keep avoiding war, you'll become a superpower. You, right? You'll grow in strength and you'll become a superpower because by then others would have fought and finished off. And this man has just reversed the whole thing by saying, dare to fight. Not many people understand this. You see, like what you have said, relevant. Okay. And what you have highlighted in the end is equally relevant. While Deng Xiaoping said, hide your Right. strength and bide your time. And this chap says, be proactive and strive to achieve things. That is absolute one opposite each other. The thing which doesn't catch attention is his dare to fight, where Yeah. he's overturned, Because a that lot of enormous attention amount has of been given to fend fire your way, but not the last part, day to fight. last That's one. why I said, let me give the complete 24 characters, what Yeah. it was. And I will give you this towards the end when we talk of this Jaldi fight because that comes back again. Yes. Okay. Now, Okay. having done Next one. that, next slide, we'll see what all have they achieved. Okay. Now, what he had given the strategy, I call it the Deng Xiaoping way, DXP way. Yeah, see. So he is the first one to have actualized what Sun Yat-sen had given as the concept for to develop China, which was International Development of China, published as far back as 1922, with all maps and how to go about it. We know that Mao Zedong did not follow that, and he went for the great leap forward in cultural revolution and destroyed actually Chinese economy. He has strategized it, how to go about it, and exactly how to do it, and that is why he had given that policy strategy that kuch mat karo, chupchap se karte jao, where you find that despite his aggressive suppression of the movement by the university students in Tiananmen Square, yet the West continued to support him. And they brought China into WTO, knowing fully well China does not follow any of the international norms and regulations of WTO. In 2001, he brought it. He is the one who said it's good to be rich, and he had this social contract with the people. We will give you economic prosperity, and you will have reduced freedom and rights. And throughout his and his two proteges tenure, you find a double-digit growth of China by following this strategy. Yes, they took a hit during the 2008 and post 2008, 9, 10 when the global crisis happened, but the Chinese economy was thriving. He had also followed the concept of Sun Yat-sen, learn from the West and grow strong. So many of their students had gone to study there in the West and are still there, and they still are still there to steal from the West the technology and give it to them. And like I mentioned, 100 years to achieve, and leading by a consensus within the Politburo Standing Committee. It was not a one-man show. And you Yes. groom your next generation leaders. While Chiang Zemin had to be brought in early because what happened in Tiananmen, he was not there, so they had to remove that, and they brought in him and Wen Jiabao. But immediately after that, Hu Jintao had been brought into the Politburo, and he was groomed for 10 years to take over. And he was the one who set terms and retire, so that there is a smooth takeover and continuation of policies. Hey, not only that, I just wanted to highlight something else. That when you said the decision by consensus, in fact, Hu Jintao had gone to the extent of saying veto. He'd given veto power to those in the Politburo standing Polit- committee, not Standing Politburo, standing committee. standing up. He says the consensual decision making was to that extent that Hu Jintao had given veto power. Of course, now it's all gone, right? Yes. So I just wanted to highlight that. Yeah, please continue. And he had kept made a clear separation from the Politburo and the State Council, Yes. right, sir? And the premier was responsible for all the economic and fiscal and monetary decisions.
And he set terms for retirement ages to ensure that there is no move, repeat like what Mao had done, that he would be for life, and the disastrous way when single man control takes place. But the one major disaster, which is still being felt, which he enforced, was Mao's one child policy, which he enforced, and they were forced sterilization and God knows what all. Yeah, I agree with you. Right, sir? Forceful implementation. But the economy grew. People became rich, and they were ready. They said, okay, you take away our freedom and other things, we will not talk, but I have the money to spend. Now look at the total 180-degree shift of the Xi Jinping way, which I call the XJP way. He has reverted to Maoism minus welfare of society. That is what is, he claims, signification of Marxism. Marxism actually is that from home to tomb a person is looked after. He doesn't have to bother. He doesn't pay. Now, when Deng Xiaoping shifted, it was capitalism with Chinese characteristics, or you could say Chinese way of capitalism. So you had Communist Party ruling, but it had become capitalistic. And you had to pay your way from home to tomb. And it is expensive in China. So when people grew rich, they didn't mind it. But now he's reverting back to communism, that you can't be rich. And yet you have to pay for everything. So he is going back to, it's not good to be rich. Look at the way he's got after all the rich people. Now there is while Deng Xiaoping did it once with India in 87, 88, when you had the Somdurongchu incident. After that, he never aggravated the border. Right, sir? But the moment Xi Jinping has come in power, 2012, there has been an aggressive outreach in the neighborhood and beyond to recreate the Middle Kingdom, whether it be on our borders, whether it be South China Sea, East China Sea. The way he has done economic coercion, look at the way he has squeezed Hambantota, Djibouti, Gwadar, Myanmar. You just see that. And when he says common prosperity, it looks more to steal from the rich to further external aims. I personally feel that his One Belt, One Road had been such a disaster. They have overspent so much with no returns coming in. He needs money. There are no returns coming in. You put in so much of money inside the One Belt, One Road, and you gave it to all the most of the global South. How are they going to pay back? It's good for your economic geostrategic influence that you do a squeeze and say, I will take the strategic asset. Fine, you have taken the strategic asset, but then your economy leaks. You don't get that money back. He has taken total centralized control under him. Almost all the major leading small groups, there are about 17, 18 of them, about 13 of them which are important, he heads. He's taken away even the powers of the premier, and he decides on economic, fiscal and monetary policies. And in the latest one, the state council has become defunct. All the powers he's taken against him. State council used to control internal security. He's taken everything under the CMC. And there's no terms for retirement age. It is on his own whims and fancies. Right, sir? There's no grooming of next generation leader. Hun Chunwa was supposed to be the next generation. Is not even there in the Politburo. Sun Ghenkai was supposed to take over from him. Usko to jail mein dal diya. So it is only loyalty to him that counts, and there is no merit. That leads to a very critical thing. Supposing, God forbid, something happens to him, who leads? Will you go back to the fifth generation, somebody, to bring him in to lead? It disrupts the complete. It has, like we are talking in the alternate Aapke channel mein on disruptive technology. This is total disruption of the how the governance model will function. And what are the major disasters? There are no economic growth going on. It is just going down a steep slope. And for the people,
there was a small loss of freedom and rights under Deng Xiaoping way. Here too is totally curbed it. It's the squeeze is getting tighter and tighter. And add to that is the growing economic isolation that he is facing from the US and the West. The gradual decoupling which is taking place, the denial in high tech that is going on for him. How is he going to grow? Right. And the latest which आप has come in, where South Korea and Malaysia, South Korea has been warned that they should not jump into supply chips to him. Yes, this is yesterday's news. कल की बात Yes, है ये. ये कल की Right. बात. Again, आप 2 मिनट में इसको संक्षिप्त में हिंदी में बता दीजिए. 2 मिनट क्योंकि संक्षिप्त में ये है कि जो टंग शाओपिंग ने किया था कि उनके इकोनॉमी को ओपन कर दिया कि भाई हम कम्युनिज्म नहीं फॉलो करेंगे, हमारा ये रहेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ही चाइना को रूल करेगा, लेकिन हम कैपिटलिज्म को लेके आएंगे. और उसके तहत उनने जो उनका गुरु है, दोनों अक्रॉस ताइवान स्टेट्स, दोनों साइड में उसको गुरु मानते हैं, डॉक्टर सोनियात सेन. उसका एक 1922 का किताब है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइना. तो उसको उसने पूरा किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है किया. वो पहला बंदा था जो कम्युनिस्ट पार्टी में कहता है अमीर होना अच्छा है. तो लोगों के साथ उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई हम तुमको, कम्युनिस्ट पार्टी तुमको इकोनॉमिक ग्रोथ देगा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगा और आपके फ्रीडम और राइट्स को थोड़ा हम कम करेंगे, आप हमारे बारे में आप पूछताछ नहीं करेंगे. और इस तरह से जो खुला यूएस और वेस्ट सब आए, उसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया. तो इनको डेंग शाओपिंग के रास्ते में जब चले हैं, डबल डिजिट ग्रोथ मिला है. और उसने अपने लेक्चर्स में कहा था, जो सब उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ओपन डोमेन में नहीं दिया है, लेकिन कुछ लोग जैसे माइकल पिल्सबरी है, हेनरी किसिंगर हैं, इयन ईस्टन हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो वहाँ पे जाते थे 80-90 के दशक में, तो उन्होंने ये पढ़ा है उसका. वो कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि 100 साल लगेंगे चाइना को स्ट्रॉन्ग पावर बनने में. तब तक हमने उनका जो स्ट्रैटेजी था, हाइड योर ताकत एंड बाइड योर टाइम, फॉलो करना है 100 साल के लिए. और बीच में अभी ये मतलब जो 5वां जनरेशन है जो शी जिनपिंग का है, अब तो तीसरे इसमें आ गया है. पिछले बार जब 5 साल में था, उसने एक स्टडी करके देखना था कि क्या जो ट्रैजेक्टरी 100 साल का हमने रखा था, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टाइमलाइन एडजस्ट करना है, आगे जाना है, पीछे जाना. नेक्स्ट चीज उसने किया था कि एक कोई लीडर जो है वो अपनी मनमानी नहीं करेगा. उनका एक छोटा सा ग्रुप होता है पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का, वो मेन पॉलिसी डिसीजन वहां पे होगा बाय कंसेंसस, सब राजामंदी के साथ करेंगे. और पॉलिट ब्यूरो के अंदर अगले जो लीडर्स आने वाले हैं उनको लेके लाया जाएगा ग्रूम करने के लिए, कि 5-10 साल 7 साल उनको ग्रूम करेंगे ताकि वो समझ लें कि हाईएस्ट लेवल पे गवर्नेंस कैसे होता है और स्मूथ ट्रांजिशन होगा यहाँ से वहाँ. और टर्म्स लगा दिए थे, जैसे 2 साल 2 टेन्योर मिलेंगे 5-5 साल के प्रेसिडेंट के लिए. रिटायरमेंट एज रखा था 67-68 अप और आउट, 65 नीचे वालों के लिए. तो इस तरह से रिटायरमेंट एजेस रख दिए थे ताकि दोबारा जो इस तरह से धांधलेबाजी हुई थी, माओ त्से-तुंग के नीचे कितने लोग मारे गए थे, वो सब नहीं होगा. लेकिन एक खामी थी जो उन्होंने किया था, जो माओ त्से-तुंग ने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाया था, चावनलाई और माओ त्से-तुंग ने, इन्होंने उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया था. और उसमें काफ़ी लोग स्टेरलाइज हुए थे, काफ़ी औरतों के यूट्रस वगैरह निकलवा दिए थे कि बच्चे ना हो. उसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है. शी जिनपिंग ने क्या किया, अब पूरा फाड़ के फेंक दिया ये उनका जो था, और इन्होंने बैक टू माओ त्से-तुंग के रास्ते में. लेकिन माओ त्से-तुंग में के टाइम में क्या होता था, वोम टू टोम सारा कुछ, जितने लोग हैं उनको स्टेट लुक आफ्टर करता था. आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे हॉस्पिटल के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे आपको.
आज तो पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि टंग शाओपिंग ने तो कैपिटलिज्म ले आया था, तो स्टेट कुछ नहीं देता है आपको, आपको कमाना है और आपने पैसे देने हैं, हर चीज के लिए पैसे देने हैं। लेकिन अब ये कहता है अमीर होना अच्छा नहीं है, अमीर होना अच्छा नहीं है, स्टेट भी सपोर्ट नहीं करेगा आपको, और टोटल दादागिरी नेबरहुड में कि भाई मैं दादा हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं जैसा कहूँगा आपने वैसे ही करना है। देख लो आप अपने एलएसी में किस तरह से वो नौटंकी कर रहा है, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में आइलैंड्स बना दिए, पूरा गुंडागर्दी कर रहा है वहाँ पे। कॉमन प्रॉस्पेरिटी, कॉमन प्रॉस्पेरिटी के अंदर जो उसके अमीर लोग हैं उनसे पैसे छीन रहा है। अभी देखो आप अपने एंट अलीबाबा का जो पेरेंट कंपनी है एंट, उसके पीछे कैसे पड़ गया। जैक मा तो ऑल सब तरफ चला गया, अभी दबा के उसको बुला लिया अंदर, नहीं तो बीच में फोटो आया था वो तो जापान में बैठा सब्जी खरीद रहा था, सब्जी मार्केट में स्कूल के बच्चों अब को वो पढ़ा रहा टीचर बना दिया, वो उसको टीचर बना दिया। बना एक दिया। गांव में टीचर है वो आजकल। हाँ, ओ कल्चरल रेवोल्यूशन टाइप यार, कॉमन प्रॉस्पेरिटी में गांव में टीचर बना दिया उसको कि भाई तुम ये सब करना छोड़ो। और दु, वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन के अंदर गिना जाता था, उसको सॉर्ट आउट कर दिया, सारा कंट्रोल अपने नीचे ले लिया है। कुछ लोग तो कहते हैं माओ से तुंग से ज्यादा ताकतवर हो गया है चाइना में, हर डिसीजन यही लेता है। और कोई ग्रूमिंग नहीं है, रिटायरमेंट एज सब निकाल दिया है, अपनी धांधलीबाजी है, किसी को बना दिया नहीं बना दिया, रख लिया नहीं रख लिया, कोई ग्रूमिंग नहीं है अगले लीडर के लिए। अभी किसी को पता नहीं है कौन है, इसके बाद कौन आएगा, और इसीलिए सब कह रहे हैं कि शायद ये तो जब तक मरेगा नहीं यही रहेगा। कोई किसी को ग्रूम भी नहीं कर रहा है, केवल उसकी लॉयल्टी मायने रखती है, बाकी कोई मेरिट वेरिट कुछ मायने नहीं रखता है। तो वो क्लियर दिखता है आपके पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में अभी जिसको लेके आया है, सब नॉविस हैं, कख नहीं पता उनको क्या है। इसीलिए अब खोज खोज के एक्सपर्ट्स को उनके नीचे वाइस प्रीमियर और ये वो करके लेके आ रहा है। अब वो क्यों काम करने लगेंगे, उनको तो डर लगा रहेगा कि मैं कुछ बोल दूं, जो ये बोल रहा है गलत है तो वो तो मेरे को जेल में, एंटी करप्शन में जेल में डाल देगा। तो मेजर डिजास्टर ये हो गया है कि कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है लोगों के लिए। एटलीस्ट वहां पे टंग शॉपिंग के तर पॉलिसीज के अंदर तो मतलब ये था कि आपके फ्रीडम और राइट्स कम हो जाएंगे, हमें क्वेश्चन मत करो, ग्रोथ मिलेगा, और मिल रहा था। अब ग्रोथ है ही नहीं, कम से कम होते जा रहा है। कुछ तो कह रहे हैं बिल्कुल स्टैगफ्लेशन हो चुका है, रिसेशन में भी जा सकता है। कोई तो उन्हीं के बंदे बाहर हैं, जैसे एल्मर यूएन है जो हांगकांग का पहला पार्लियामेंटेरियन था, वो तो कह रहा है ये तो ऑलरेडी डिप्रेशन में घुस रहे हैं, ये हालत है उनकी इकोनॉमी की। लेकिन लोगों के ऊपर और टाइटर कंट्रोल, सर्वेलेंस, फेस रिकग्निशन, पूरा सेंसरशिप, उनके पूरे ईमेल में सब तरह सेंसरशिप हो रहा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस तरह के बिहेवियर से वो ग्लोबली आइसोलेट हो रहा है। उसके पीछे कोई, यूएस और वेस्ट उससे डीकपल करके निकल रहे हैं। अभी आप लेटेस्ट देख लो ना, आईफोन के आपके दुकानें खुल रहे हैं यहाँ पे, मुंबई, दिल्ली, अभी चेन्नई में भी खुल जाएगा, उसके फैक्ट्रियां यहाँ लग रही हैं। तो धीरे धीरे करके सारे निकलते जा रहे हैं उससे। तो ये इसका प्रॉब्लम हो गया है अभी, कि अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है चाइना के अंदर कि क्या रास्ता लेंगे। राइट, ये आपने अच्छी बात किया, संक्षिप्त में बता दिया कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है। और जैसे हमने बात किया, चाइना एक क्रॉस रोड्स, चौरासे में आके खड़ा हो गया, चौरास्ता में। राइट, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं सबसे आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू गना शॉट। जो भी देख रहे हैं आप, जरा बेल आइकॉन दबाइए और लाइक बटन को भी दबाइए, ताकि इसमें ट्रैफिक बढ़े, ठीक है, और ताकि हम सबको प्रोत्साहन मिले। खास करके जो गेस्ट यहाँ आ रहे हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जो गेस्ट आ रहे हैं उनको तो कम से कम कुछ तो प्रोत्साहन होगा। राइट, प्लीज सब्सक्राइब टू गाना शॉट इफ यू लाइक इट। एंड ये मेरा वादा है जो मैं पहले दिन से आपको करके आ रहा हूँ,
इससे बढ़िया आपको डिफेंस और स्ट्रेटेजिक चैनल इंडिया में नहीं मिलेगा, राइट? ओके, ओके, विल अब इसके साथ ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि तो इसके पहले आई गिव वन और टू या पॉइंट्स या मोर। प्लीज। हाँ, तो इसमें क्या था, टेंग शाओपिंग के वे में जब वो राइज कर रहे थे, जब डर लगता था, तो ये कॉइन किया था लाइक हुजिनटाओ ने, पीसफुल राइज, हारमोनियस राइज। तो उससे यानी ये पूरा डिसेप्शन था कि हमारे स्ट्रेंथ को हाइड करना। तो ये पीसफुल राइज, हारमोनियस राइज इज ऑल डिसेप्शन। और इस डिसेप्शन के पीछे इन्होंने ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस की, जब हम सुपर पावर हो जाएंगे तो ये एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को हटा देंगे, हमारे शैडो इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे, वो सब बनाना शुरू कर दिया था। और पते की बात यह है कि यूएस तो उतना नहीं था, लेकिन वेस्ट के काफी कंट्रीज हैं जो उसके हिस्सा है। ठीक है, अब अपना, बट ये सब करते हुए कोई अपने तरफ अटेंशन नहीं अट्रैक्ट किया। तो अटेंशन अगर अट्रैक्ट नहीं करते हो तो आम यही होता है कि आप ध्यान वहां नहीं जाता है, आप बढ़ते रहते हो। इसके विपरीत शी जिनपिंग ने एग्रेसिवनेस दिखाया, टर्म्स यूज करने लगे, कॉमन डेस्टिनी, कॉमन प्रॉस्पेरिटी। अभी भी जैसे ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव करके सब निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिव हो गए। हालांकि एग्रेसिव हो गए और इकोनॉमिकली डिक्लाइन चल रहा है उनका। यूएस से लड़ पड़े हैं, ट्रेड वॉर हो चुका है, वेस्ट के साथ भी ट्रेड वॉर चल रहा है उनका, तो इकोनॉमिक और डीकपलिंग शुरू हो गया है। इतने एग्रेसिवनेस पे आ गए थे, कोविड के अंदर वुल्फ वॉरियरशिप वगैरह हो गया था, तो वर्चुअली अभी एक ग्लोबल सॉर्ट ऑफ एन आइसोलेशन होने लगा है। इस ध्यान अभी पे भी मत हुआ। जाइए कि मैक्रो और ये गए थे वहां पे, जी नहीं। वो उनको तो बताने, डांटने गए थे कि रशिया को मदद मत करो। नहीं नहीं, नॉट ओनली दैट, अभी ये जो इनका एम्बेसडर है जो फ्रांस में है, जम वो हाँ, जो फ्रांस में, उसने बोल दिया कि ये जो यूक्रेन और जितने देश थे जो रशिया पोस्ट के साथ, सोवियत स्टेट्स। पोस्ट सोवियत स्टेट्स, वो स्टेट्स नहीं है, वो सब रशिया के हिस्से हैं, वो कोई अलग नहीं है। तो उसके ऊपर भी कलबली मच गया अभी। तो कहने का तात्पर्य है कि सारा, पहले तो छुपे चुपचाप कर रहे थे, छुपे रुस्तम बन रहे थे, लेकिन आज के तारीख में सारा नेगेटिव अटेंशन चाइना के ऊपर है। वो कुछ कहता है तो सारे टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, ये हालत हो गया या फिर भी है। शो द नाउ वी स्लाइड। गो टू द क्राइसिस। क्या हुआ है, जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है, और एक्चुअल वैल्यू भी जो 18 ट्रिलियन कह रहा है वो डाउट पे आने लगा है, क्योंकि इनके खुद के ही रिपोर्ट्स हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, ग्लोबल टाइम्स में, जो कहते हैं कि 2008 से जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ था, ये 2% एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर 2% एक्स्ट्रा अपना ग्रोथ दिखा रहे हैं जीडीपी में। अगर वो लेते हो तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो मतलब इनका तो 50% भी नहीं बनता। तो अब ये डाउट आ गया है कि इनके जो एक्चुअल फिगर्स ये सच हैं कि जी ग्लोबल टाइम्स और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आया वो सच है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है। नॉट ओनली दैट, अगर आप देखेंगे तो 2019 में, 2019-20 की बात है, इनका जीडीपी था 14 ट्रिलियन ऑफिशियल, राइट? 20, 21, 22, 3 साल, और 3 साल में आज ये बोल रहे हैं 17-18 ट्रिलियन है। और जब इनका ग्रोथ ही नहीं हुआ 6% से ज्यादा, यस, आप 6% भी लगाओगे, 18% भी लगाओगे, 10 इसके ऊपर, वो 2 ट्रिलियन और जुड़ सकता है, राइट? 12-13 ट्रिलियन का आप, हो सकता है 14-15 ट्रिलियन हो आज के दिन, और 17-18 ट्रिलियन की कहाँ बात है, ये कहाँ बात है? और आपने जो बोला उस इसके अलावा जीडीपी तो एक 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 पहलू है, पर इसमें नॉन परफॉर्मिंग जीडीपी भी है। यस, इनका जो लॉर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इन्होंने बना तो दिया, नॉन गोस्ट सिटीज परफॉर्मेंस, जो बोलते हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल।
इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना दिया, हाई स्पीड रेल है जिसके वो 25% से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, राइट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो इनका डेड जीडीपी जो है ना वो 20% के करीब है, वो माना जाता है। तो अगर आप उसको निकाल दोगे तो इनका जीडीपी तो और भी गिर जाएगा। कम हो जाता। देन खैर द इसके पॉइंट बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं इनका जब इकोनॉमी का विश्लेषण करूंगा तो उस वक्त और उसमें गहराई में और क्लियर बताऊंगा। आए। या Then a point that you had been making in your writings also, sharply declining population. पॉपुलेशन या तो वो आबादी घट रहा इम्पैक्ट होता है वर्किंग हैंड में, क्योंकि आप वन चाइल्ड पॉलिसी में अभी भी हैं। ने आपने खोल दिया है कि 3 कर दो, लेकिन लाइक जैसे मैंने बताया था, लाइक आई सेड दैट होम टू टोम अब आपको हर चीज पे करना है एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो शादी भी कर लेते हो तो आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, उनका बर्थ रेट इज लेस देन देयर डेथ रेट, क्योंकि इट इज सो एक्सपेंसिव। फीस देना, पहले तो हॉस्पिटलाइजेशन फीस, फिर बच्चों को पालने का फीस, फिर उनके स्कूल का फीस, बहुत एक्सपेंसिव है। और ये 4-4 ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहे हैं, और अगर उनके दोनों साइड के चारों ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव हैं तो उनको भी देखना है इन्होंने। एक और यही 2 हैं हस्बैंड वाइफ जो देख रहे हैं। सो देर इज अ बिग प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग, और वो आगे बताऊंगा जो पॉइंट्स आए थे। तो काफ़ी जो पढ़ता हूँ मैं और सुनता हूँ मैं इनको, ये बोल रहे हैं कि एक इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन आ रहा है, और काफ़ी झूठ बोल रहे हैं ये। और इसके बारे में 2 चीज़ होते हैं कि बिकॉज ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इंटरनल कंजम्पशन इनका कुछ है नहीं, पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। 80 to 85% इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो एक है कैक्स नंबर, दैट इज कंटेनर अवेलेबिलिटी इंडेक्स नंबर। ये इंटरनेशनली सारे पोर्टों का, सब तरफ का जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड होता है, तो ये जर्मनी में बेस्ड है। वहाँ पे ये सेट करके निकालते हैं कि अवेलेबिलिटी क्या है कंटेनर का, ताकि पता रहे कौन से पोर्ट में अवेलेबल है क्या है। अगर आपका कंटेनर अवेलेबिलिटी इंडेक्स 0.5 से कम है, मतलब अच्छा ट्रेड चल रहा है आपका, मतलब हाफ से आपका नीचे है, मतलब कंटेनर जैसे ही आता है निकल रहा है, एटलीस्ट मोर देन 50% इज गोइंग आउट, उसका मतलब ये होता है। कंटेनर अवेलेबिलिटी इंडेक्स आपका अगर 0.5 से ज्यादा है, मतलब प्रॉब्लम है, खाली पड़े हैं कंटेनर, बाहर नहीं जा रहा है। 100 कंटेनर आ रहा है तो 6 से 7 कंटेनर आपके, 10 कंटेनर आ रहा है तो 6 से 7 आपके खाली पड़े हुए, वो है अवेलेबल कंटेनर इंडेक्स। और फिर कॉस्ट पर कंटेनर, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो कंटेनर का कॉस्ट बढ़ जाता है। आज के तारीख में पूरे ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना में कंटेनर अवेलेबिलिटी इंडेक्स वेरीज फ्रॉम 0.6 to 0.7। कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, कुछ जा नहीं रहा है। कॉस्ट पर कंटेनर का कॉस्ट जो पहले था, पिछले साल भी जो कम था, उससे भी अभी कॉस्ट पर कंटेनर 50% कम हो गया। मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। नॉट ओनली तो दैट, ये मैं आई जस्ट वांट टू ऐड, ये जो इनका जो पीक प्राइस है कंटेनर का, उससे आज अगर देखेंगे तो तकरीबन 70% गिर गया है, और कहीं कहीं जगहों में 80 से 90% भी गिर गया है। जो एक कंटेनर इनका चाइनीज पोर्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए तक जाता था, वेस्ट कोस्ट, मेरे को याद है ये बोलते थे कि 20-25 हजार डॉलर होते थे एक कंटेनर का भाव। आज के दिन मेरे ख्याल में ये 2-3 हजार डॉलर में मिल जाता है, हाँ सर, इतना गिरावट। 2500 आज के अप्रैल के महीने में तो 1500 समथिंग हो गया। तो ये इट बहुत ही डाउन है। इट इटसेल्फ टेल्स अ वेरी ग्रिम स्टोरी कि भाई क्या कंडीशन है इनका। अब ये अपना प्रोडक्शन इंडेक्स जो भी बताते रहे, जो भी प्रोड्यूस आप कर रहे हो, निकल के कहीं जाएगा नहीं जा कहाँ? रहा, निकल के नहीं जा रहा। दूसरा प्रॉब्लम पीएलए मॉडर्नाइजेशन का इतना तेज कर दिया, पहले भी कर रहे थे, धीरे धीरे कर रहे थे, अभी इतना तेज कर दिया है कि इनके पास ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं प्लेटफॉर्म्स के लिए। नहीं, पूरे एक और बात है इसका, एक और बात है, तो एक तो इन्होंने बोला कि ट्रेंड मैन पावर नहीं है। दूसरी बात है, अगर इतना नए इक्विपमेंट लेके आओगे, इट इज नॉट बैटल टेस्टेड,
वो आपको पता नहीं कि ये लड़ाई में काम आएगा कि नहीं, राइट। और दूसरी बात यह है कि जो आप नए इक्विपमेंट लेती आइए, पर 2-3 साल के बाद वो पुराना हो जाएगा, उसके ऊपर जो खर्च होगा वो दुगना हो जाएगा, राइट। आपके पास एक पुराना इक्विपमेंट है, वो 100 रुपए का है, आप नया इक्विपमेंट, बहुत आधुनिक इक्विपमेंट 1000 रुपए में लेके आ रहे हो, 10 गुना ज्यादा खर्चा, और उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर आप कहाँ रहे, राइट। और अमूमन जो हमारा प्लानिंग में, ये दिल नारायणन भी सहमत होंगे इसके साथ, प्लानिंग में होता है कि 30% इक्विपमेंट जो है ना एक फौज में नया होता है, 30% के करीब, ये एक तिहाई पुराना इक्विपमेंट जो सदी हुई इक्विपमेंट होती है जो इस्तेमाल में होता है, और एक तिहाई इक्विपमेंट पुराना इक्विपमेंट होता है वो जा रहा है। और ये एक स्मूथ ट्रांजिशन है, पीएलए में ये 30-40 बैलेंस, 30 हाँ 30-30-30 बोलते हैं, या 30-40, 33-33, 30-40 30 कि भाई या वो नीचे जा रहा है, माइनर चीज है। 40 है जो हाँ, एग्जिस्टिंग है, और 30 जो है तकरीबन नया जो आ रहा है। तो इसका एक ये काफी अच्छा मैं एग्जाम्पल देता हूं सर, 2 या एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल दो। अभी हम इतना बात करते हैं कि इसने ताइवान का ब्लॉकेड कराया, ईस्टर्न ताइवान के ईस्टर्न कोस्ट में इसने अपना जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है शैंगडोंग, जो साउथ चाइना सी का है, उसको डिप्लॉय किया। हम नॉर्मली कैरियर बैटल ग्रुप बोलते हैं, उसके फ्लीट ऑफ डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर, सारा कुछ चलता है उसके साथ। सर टोटल 3 शिप थे वहां पे, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक डिस्ट्रॉयर और एक अंडरवे रिप्लेसमेंट शिप, दैट्स इट। इतनी काबिलियत थी निकालने के लिए। एक्सरसाइज के दौरान भी दूसरे, अभी आज से या कल से शुरू हुआ है, उसमें भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ टोटल 4 शिप होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर, एक डिस्ट्रॉयर, एक क्रूजर और एक अंडरवे रिप्लेसमेंट शिप। मतलब यही काबिलियत है आपको लॉन्च करने के लिए, आपके पास ट्रेन मैन पावर इससे ज्यादा नहीं है। आप चाहे कितने अपने क्रूजर्स, बैटल शिप्स दिखा दो, आपके पास ये नहीं है। दूसरी बात, पर इन्होंने टोटल 3 दिन वहां पे थे जब ये ब्लॉकेड का चल रहा था पिछले एक्सरसाइज में। जो इनके रिपोर्ट पूरा मैं पढ़ रहा था, 3 दिन में टोटल 120 सॉर्टीज लॉन्च किया था उस एयरक्राफ्ट कैरियर से। अपना जब एक्सरसाइज होता है सर, 240 के करीब, 200 प्लस सॉर्टीज चलता है एक दिन में, और ये 3 दिन में 120 किया है ये इन्होंने। 3 दिन में 120, मतलब 40 सॉर्टी। तो आपके पास जहाज चलाना तो छोड़ो, ग्राउंड कंट्रोल और सर्विस कंट्रोल इक्विपमेंट हैंडल करने के लिए भी मैन पावर नहीं है। तो यही मैं बोल रहा था कि बहुत ज्यादा पेस में दिखाने के लिए कर रहा है, मैन पावर ट्रेंड नहीं है आपके पास। जब तक ट्रेंड मैन पावर आएगा, जो इक्विपमेंट है वो आउटडेटेड हो जाएगा, फिर क्या करोगे। रेस्टिव हैंड पॉपुलेशन, ये हमने देखा इसके 20th कांग्रेस के सामने भी, और कितने सारे स्ट्राइक्स एंड शी जिनपिंग के अगेंस्ट डायरेक्टली पर्सनली, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी था शी जिनपिंग, एम्प्टी पेपर के साथ, और उसके टाइम वो बीजिंग के ब्रिज के ऊपर जो बैनर लगे थे। तो पॉपुलेशन इज रेस्ट्रिक्टिव, या इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 6 महीने में जितना प्रदर्शन हमने चाइना में देखा, वो आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है सर। इकोनॉमिक डीकपलिंग हो रहा है यूएस एंड वेस्ट से। यस, नॉर्मल जो लो टेक इकोनॉमी, लो टेक मैन्युफैक्चरिंग है एंड सम ऑफ द मीडियम टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग है, वो चल रहा है। हाईटेक का डीकपलिंग बहुत तेजी से चल रहा है। हाईटेक इज गेटिंग द फर्स्ट टारगेट, इज हाईटेक विच इज गेटिंग डीकपल्ड, विच इज हिटिंग चाइना नाउ। एंड ये वाला जो आपने दिशा दिखाया था, जो इसका पढ़ा था मैंने, राइज ऑफ टांगपिंग एंड बाइलान कल्चर, मतलब ऐसी की तैसी यूथ ने छोड़ दिया है कि मेरे को कोई लेना ना देना, इतना प्रेशर हो गया। ऑब्वियसली इकलौता बच्चा है, शादी करेगा तो 4 लोगों को देखना है, और प्लस 4+4+4+4 16 जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें से जितने अलाइव हैं उनको भी इन्हीं दोनों ने देखना है।
प्रेशर इनमें से बहुत ही बढ़ गया है इनका, छोड़ दिया है, मतलब ये गिवन अप कि छोड़ दो। ये जो है ना, इसके बारे में मैंने 2 आर्टिकल लिखा है गनर शॉट में, आप जाके देखिए हाँ कि तब ये तो बहुत गजब की बात है कि इनके जितने यूथ हैं, ये बच्चे हैं, कल के बच्चे जो है ना, कल देश के कल के फ्यूचर हैं, इनके युवक सो रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है कईयों को। ये एक ट्रेंड शुरू हुआ है। ये जो ट्रेंड मैंने 5 साल पहले भी मैंने देखा नहीं, ये ट्रेंड तकरीबन 2-3 साल से पहले मैंने देखा। पहले सिर्फ तांगपिंग था, तांग मतलब लेटे रहो। अभी बाइलान हो गया। बाइलान के मतलब क्या है, यार बाढ़ में जाए, हम कुछ नहीं करेंगे, चलो। और अगर ये और स्प्रेड होने लगा, यही तो यूथ है जो आपके फौज में आएंगे, तो ये क्या लड़ेंगे? और यही है जो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और सारा कुछ देने वाले हैं। अगर यही को आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो, एंड आपको डेमोग्राफिक चेंज हो गया है और आपका जो बल्ज है हायर एज पे जा रहा है, वर्किंग हैंड्स कम हो गए हैं, किस तरह से करोगे? और इस सब के बीच में आपने अब आप 2.5 फ्रंट का आप फेस कर रहे हो आज के तारीख में, और ये सारा शी जिनपिंग का किया धराया है। आपने इंडिया के साथ भी लड़ाई ले ली है, ईस्टर्न सी बोर्ड में भी लड़ाई ले ली है, और आपके पॉपुलेशन के साथ आपके कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी इंटरनल फिशर्स आ रहे हैं पार्टी और सोसाइटी में। और ये एविडेंट हो रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि इनके बजट्स जब हम देखते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का बजट डिफेंस से ज़्यादा है। हमारी सारी नज़र डिफेंस सिक्योरिटी के डिफेंस के बजट पे होती है। ये ध्यान नहीं जा रहे हैं कि इसके टेन्योर में इंटरनल सिक्योरिटी का बजट ज़्यादा है डिफेंस सिक्योरिटी से। यही बात मैंने अपना वीडियो में इन द आउटकम्स ऑफ एनपीसी एंड 2 सेशंस ये पूरा विश्लेषण किया है। आज वो रिपीट हो रहा है, और ये सब इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। ये है या हाँ, और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, इमीडिएट तो थोड़ा कंट्रोल उसने रखा हुआ है, पूरा टाइट कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन जैसे ये टांगपिंग, बाइलान और रेस्टिवनेस आता है और फिशर्स आते हैं उसके पार्टी के अंदर, जिस तरह से अभी भी नाराज है, जिस तरह से हुजिनटाओ को निकाल के फेंका था वहाँ से, वो एक्चुअली अभी निकल के आ रहा है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनको बोला हुआ था कि कम्युनिस्ट यूथ लीग वालों को अच्छी तरह से पोजीशन देंगे, तो वो बिफोर अनाउंसमेंट खोल के देखना चाहते थे कि कौन किसको क्या मिल रहा है। वो नहीं चाहते थे उसको देखना, इसलिए उठा के फेंक दिया, क्योंकि उसके बंदों को किसी को जगह नहीं मिला। तो अब ये प्रश्न आता है इस क्रॉस रोड में, जिस पे जो डिसीजन लेंगे वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में चाइना को इफेक्ट होगा कि क्या सीपीसी क्या करेगी। अब विल यू डंप जी, विल यू क्लिप हिज विंग और गो बैक टू टंग शाओपिंग्स वे, विच आई फील इज टू लिटिल टू लेट, बिकॉज अभी सबको इतना नाराज कर दिया है। क्या पीपल ऑफ चाइना डंप करेंगे? लेकिन अगर यूथ जो है टांगपिंग और बाइलान में जाएंगे तो वो कौन सा करेंगे? बूढ़े लोगों को करना पड़ेगा। तो इसमें यह है कि अब पीएलए पीएपी किस रास्ता जाता है, क्या लॉन्ग टर्म में भी विजुअलाइज की डेमोक्रेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर ये अभी ये तो एग्रेसिव है ही है, इंटरनल फेस करेगा तो वो एक्सटर्नलाइज करेगा, ये सीपीसी के डीएनए में है। तो जो भी अभी चर्न होगा नियर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, इसमें एक्सटर्नलाइज करेगा। तो हमें अपने एलएसी से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। वेस्ट तो ध्यान रखना ही रखना है, हमने एलएसी से भी ध्यान नहीं हटा सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ उंगली करने की कोशिश तो जरूर करेगा ध्यान बटाने के लिए। या ओके। ये बहुत अच्छा विश्लेषण किया जनरल नारायणन ने, और जो कल के दृश्य और आज के दृश्य में बिल्कुल फर्क है। पर ये मैंने नया शुरू किया है, हर जो विश्लेषण में 5, आई टॉक ऑफ जल्दी 5, 5 तंबोला। तब बोलो, आई विल टॉक ऑफ 5 थिंग्स
from China. देखिए, जो भी whatever analysis we are doing is from our side. What is this? How does China look at it from inside? This. Same points. How इनके अंदर का क्या कहानी है वो मैं ये जल्दीफाई में डालूंगा आज. जल्दीफाई ऑफ जी जिनपिंगिज्म. सबसे पहला पॉइंट, ये जो बोलते हैं कि जी's चाइनीज ड्रीम इज इन डेंजर ऑफ बीइंग हाईजैक्ड बाय अल्ट्रा लेफ्ट नेशनलिज्म. राइट. अगर आप सोचते हो कि जी जिनपिंग ही लेफ्टिस्ट है और माओइस्ट है और मार्क्सिस्ट है, तो इसके भी और कट्टर अल्ट्रा बिल्कुल, लेफ्ट नेशनलिज्म है. यंग पाइज बोलते हैं उनको सर। क्या? और ये जो है ना, कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं और कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. ये लिख रहे हैं, अल्ट्रा लेफ्ट रिवाइवल थ्रेटन्स जी's प्लान टू रिवाइव द इकोनॉमी एंड टर्न चाइना इनटू अ डोमिनेंट वर्ल्ड पावर बाय 2049. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट जो जनरल नारायणन ने भी बोला, इसने जोसेफिन मा ने लिखा है, कम्युनिस्ट चाइना पार्टी कम्युनिस्ट चाइना पार्टी sorry, China's Communist Party wants to be everything, everywhere, all at once. Will central socialized control work? ये जो अभी बात हुआ है कि जी जिनपिंग सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, क्या है ये हो पाएगा? इनका खुद का डाउट है. राइट. सर उसमें जो पिछला वाला था उसमें या वो कह रहा है, hinting, if you read the हाँ, second one, return to pragmatic reform and रिफॉर्म development, डेवलपमेंट. which is Deng Xiaoping way. करेक्ट. ओके. और ओके, ये देखिए सेकंड लाइन में जिसमें लिखा है, हाउ फार द पार्टी succeeds in being the sole agent to discover problems and solve them all in a vast and complex nation remains to be seen. क्या ये सीपीसी वे होगा या एक्सजेपी वे होगा, जी जिनपिंग वे होगा या हाईवे होगा? थर्ड पॉइंट, China says it plans to bring modern socialism to rural areas, cannot afford to fail as external pressures mount. इस आर्टिकल को मैं बताना चाहता हूं, ये इनके जो एक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक सेंट्रल जगह है जहां इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, वो रहते हैं 10-15 दिन तक सबको पढ़ने के लिए. और ये आर्टिकल भी ऐसे ही है. पहले 4 दिन 5 दिन जब मैंने पढ़ा इस आर्टिकल को, मैंने कहा यार ये क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं. पर जब मैं ये आर्टिकल पूरा जब मैंने पढ़ा, ये पुराना है, 14 फरवरी का है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए. पहली बार ये बोल रहे हैं कैनॉट अफोर्ड टू फेल. चाइना में अगर ये बोल रहे हैं कि कैनॉट अफोर्ड टू फेल, यानी कि फेल होने का अंदेशा है. इसका मतलब इनका रूरल एरियाज के साथ इनका कनेक्ट कम है, मफस्सल एरिया के साथ, इनके गांवों के साथ, इनके जो गांव वाले इनके साथ एक दरार है. राइट. ये बहुत ही प्रॉब्लम है और ये इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है, जो जनरल नारायणन ने बताया, आइसोलेशन हो रहा है, डीकपलिंग हो रहा है, डी रिस्किंग हो रहा है और इनको दबाया जा रहा है. राइट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ये मैं जो भी मेरा ये है कि आप लोग इस आर्टिकल को पढ़िए इन डिटेल. नेक्स्ट, कॉमन प्रॉस्पेरिटी, जिसके बारे में जनरल नारायण ने बात भी किया. मोर चाइनीज लुकिंग टू डोनेट अमिड जी जिनपिंग्स कॉमन प्रॉस्पेरिटी कैंपेन, सर्वे शोस. पर बात यह है, अगर आप पढ़ोगे तो इनको दबाया जा रहा है कि जिसके पास पैसा है, ठीक है, कि पैसा दो, और ये इनको तकरीबन एक तरीके से लूटा जा रहा है. ओके. और ये बात 2 सेशंस में भी इसने बात किया कॉमन प्रॉस्पेरिटी का. कॉमन प्रॉस्पेरिटी का जो थीम है ना, बहुत खतरनाक है. राइट. ये इतना खतरनाक है, अमीर चाइनीज चाइना छोड़ के भाग रहे हैं. वो जाके मलेशिया में खरीद रहे हैं, वहां जा सिंगापुर में खरीद रहे हैं, यूएसए में खरीद रहे हैं, पर चाइना छोड़ रहे हैं. राइट. और लास्ट पॉइंट,
Xi Jinping says he's preparing China for war. The world should take him seriously. यही बात जो जनरल नारायणन ने बोलता है डेयर टू फाइट, जी जिनपिंग बोलता है डेयर टू फाइट। और ये It, जिस दिन से इसने पद संभाला है, ये बोलता आया है कि लड़ाई के लिए तैयार रहो, लड़ाई जीतना चाहिए। और इसका क्या होगा परिणाम देखेंगे, पर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एज फार एज आई एम कंसर्न, Bilkul, राइट। sir. And the point which I had made last, that whenever they face internal problems, they hit out. हट आउट। They सो hit out. क्या He has to क्या prepare for war. प्रिपेयर टू फॉर वॉर, राइट। आज के जल्दीफाई में इतना ही, राइट। और मैं कुछ सवाल लेंगे, दो एक घंटा हो गया। मैं मेरे ख्याल में वी कैन टेक सम क्विक क्वेश्चंस। आई Sure, वुड sir. रिक्वेस्ट यू टू फिनिश ऑफ, गो थ्रू फास्ट, राइट, Yes, sir. so that we don't have this thing. Okay, the first question is, yeah, it's a little off question, but we'll take it. Raghunandan says, sir, I think USA was a fool not to invite Russia in Quad Plus and provoking Russia to start a war against Ukraine. Your view on it? So Uh, this is a separate topic we yeah, can we'll look not at this thing. later. So we'll We are take looking topic. at China. Yeah. Okay. Kumar Gopalan says, ask, is there any chance of Shanghai Group for revival and chance of overthrowing Z? It depends. Like I said, I don't see anything light at the end of the tunnel till the near term. Near term. नियर अभी टर्म तो में मे बी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कुछ long हो term में जाए तो बात हो, अलग है। मीडियम टर्म में तो जिस तरह से ये टेकन होल्ड, unless the PLA or PAP revolts and there is civil war, you can't have it, and I don't see that happening yeah, immediately. I agree with you. Okay. Vishwanathan says, what is China's core strength? Is it economic power or military power? What would be the outcome if its economic prowess is stymied by the West and US, who continue to be its chief importer? Let me answer this. Let me answer this, right? Because you must understand, Vishwanathan, after the two sessions, Xi Jinping and company have changed track. They've changed track. Today, economy is not their focus. Their focus is military, diplomacy, and technology. Okay. Obviously, their core strength is not economy today. Maybe 1 year back, their core strength was economy, not today. Actually, if you see, the sense of the whole thing today is that China is going through a very unstable phase. The depth itself is not clear which way it's heading. So there's no. I would not like to comment more than that. Okay, what's the group's opinion on the controversial statement of MEA ministry when he was asked about India being the most populous country? Oh, we'll leave it. That's a very minor thing, right? Neil says, respected sirs, would you like to predict the future of Xi Jinping? Natural death, assassination, willful step down, anything else? Willfully, though, he won't step down. Will not down. Rest is open to speculation. ये कुछ भी हो सकता है, पता नहीं. Who knows? He might, in the medium term, he himself might face corruption. He might Yeah, be purged through corruption. You never know. So yeah. it's a speculation. But willful, he is not going to step down. ये अपने आप नहीं जाएगा बाहर. No. Right. Right. How can we compare the era of Deng and Xi? China was a very poor and country then, weak country then. It is a matter of debate whether Zheng would have done in today's capacity. I would just say that if they had followed that policy, maybe another, like if they had gone through it for another 10 years under Xi Jinping or whoever was there, they would have come out much more strong. They could have come out much more strong than what they have, where they are today. I can't speculate what Tang Xiaoping would have done, because remember, he is the butcher of Tiananmen Square. Yeah. And he's also the guy. He's also the guy who brought this one-child policy And brutally implemented it. Look, let me spend 2 minutes. You know, China has been blessed with leaders who are destroying it. You see, in the past, ever since the Communist Party came into power, the first leader, Mao,
had the great leap forward in the Cultural Revolution. He created the biggest man-made famine on earth, and it is reported that 30 to 40 million people died. People were reduced to cannibalism in that time. And during the Cultural Revolution, he finished off the complete intelligentsia of China and took them back by decades. Right. Then comes Deng Xiaoping. Deng Xiaoping is supposed to be have done great revolution, opened up the country, and set this path on hide your strength and bide your time business and all. But he also brought this one child policy. Right. He brought this one child policy, and he has destroyed China forever. Right. Xi Jinping. Xi Jinping, it was felt that he will be the compromise candidate, like what this thing, but he has been even more lethal. He is a chap who's more interested in his own history, that जीते जी ही इसने अपना history लिखवा दिया. He has you know declared victory over COVID when there was no victory. And that 3 years in which he has isolated China from the rest of the world and he has implemented zero COVID has destroyed the economy. It has destroyed the social fabric. ये तो हम देख ही रहे हैं अभी. अब अभी थोड़े दिन और देखिए इनका जो social fabric किस तरीके से उभर आएगा. So if you see overall, the three great leaders of China are the ones who are going to ensure that China goes down. Okay, so this is where it is. Saibal, it's a very important question you raised. That's about it. Okay, the next question is Arindam. Good evening, sirs. Learning a lot about our unreliable neighbor. Being from Assam, would like to know about the support to Northeast insurgent groups. Ground situation alarming. Arindam, we'll talk about this later. In fact, if you look at the video I had done with General Shokin Chauhan on Myanmar, He covers. all this is there. ये अभी हमने काफी विस्तार में इसको हमने उसमें कवर किया है. So I don't want to answer it now because then we'll run out of time. Right? Do you believe that the Chinese military-industrial complex would be someday as robust as the one in US? Military-industrial complex of US is the backbone of their economy. Yeah, It's difficult because you can reverse engineer and go that much only. and that You not, can't, not far. you can't go far. And the biggest drawback has always been in their engines. So it's under par. Right. It is being reported that PLA is moving thousands of troops all over Bhutan, all around Bhutan, and has also stationed ballistic missiles close to Siliguri corridor. Why? Some say Bhutan invasion, but I don't agree. Shritik, don't get too worried about it at this point of time. Nothing is going to happen. They Right? don't have thousands of troops available in Tibet. वह जगह ही नहीं है रखने के लिए. So leave it. Don't worry. Right. Bimal Vaishnav, China has to stop being expansive, leave debt trap policy, instead should pay royalty for sovereignty to concerned countries whose land and sea is used for trade, using fair trade practices with respect. We agree with you. There's no two ways about it. Okay. Right. Bimal says, was GOI also following bide time hide clause like China, or are we being just reactionary? If the first is true, what was our original plan? If the second is true, are we always going to be reactionary? Don't have any hegemonistic policies with us here. We have not even thought about taking over any territories of other countries. Just keep expanding. We don't do that. So don't compare us with China. We have nothing to do with them. We follow Vasudhaiva Kutumbakam. That everybody should prosper. Not that I take away everything from them and put them in a debt trap. So you're Our comparing chalk philosophy with is different. cheese. Our philosophy is completely different. And it is giving us good dividends, let me tell you. It is giving you tremendous dividends all over. Okay, Rohit, is India prepared for war? Short answer, yes. Okay, right. Next, Tarun, nuke uranium is being sent to China from Russia. Yeah, that's a statement of fact. It is also going to USA, or enriched USA, so uranium is going to USA also. right. Only China. What will motivate China and hand to recognize India as humans and not barbarians? Oh, well, Jack,
let's leave They that. can't. We are They have talking. been taught from the childhood the Yeah, circles of who all are there. So, yeah. Swarup Sethi asks, sir, China's internationalization of yuan is basically exporting its inflation and debt. Your opinion about benefits of first and fast mover? Look, Swarup, I've just written an article on yuanization of the world. yes. I just published it yesterday. Go to Not Ganashot. It's in Financial Times also. Just write yuanization of the world. Financial Express, you'll get my article and you'll get my complete analysis of the story. there are Okay? hardly any takers for the Takers. yuan. Right? Okay. And let me also give you another thing, view. The day yuan becomes the international reserve currency, China has to open up its market. It has to open up everything. It will collapse. So it's never going to happen. Okay. Enforcing one child policy, better to shed a river of blood than to birth one more child. Chinese party, yeah, that's okay. That must be a statement. That's the thing. We'll leave it at that. Mukund, so what is the opinion on Peter Zihan analysis that look, Peter Zihan makes his own thing. A lot of his, he makes bombastic statements. Many of them have not come true, so we won't go by it. We are not Peter Zihans. We go by facts. We go by analysis, right? Whatever I talk, incidentally, whatever I talk is based on research. And before I talk, I publish an article on it invariably, or I take data from my previous articles and this thing. That's the thing about Gunner Shot. And when my guests come and speak here, right, if they're not telling the right thing, I interject and talk the right thing. If they talk the right thing, I support them. So we are not talking Peter Zihans. We are professional I will military just analysts. add one thing, sir. If you look at the demographic of China today, it's something similar which is there in Japan or South Korea or even in the West, where the death rate is slightly higher than the birth rate. Why doesn't he talk of a collapse of population there? There, it He's doesn't only happen. talking of it's Yeah, the same thing everywhere. It's happening. everywhere it's happening. The problems for China are different, right? See, it's not as if China is going to collapse tomorrow and run away and fall. You can't say 1.4 billion people or 1.2 billion, whatever it is, can't go away. They can't wish them away. They're going to be there. You think China is not going to be a power tomorrow if it collapses? It will still continue to be a power. It will still continue to be a big economy. It will still continue to be a threat to India. Till such time your bilateral issues are not sorted out. We are analyzing this to see how does India behave and how does India act with them. That's the larger thing. Okay, the fact that they're going through a demographic decline is a fact. We are seeing what's going to be the outcomes of that. That's the more important thing. Okay. Okay, Gaurav says if we see from a little far away, human race itself is fighting itself. Which decade do you see, or it's never that human? Yeah, well, look, this will continue. As far as two humans are, they'll fight. Don't worry. Okay. Uh, is it ever possible to overthrow Z given his extensive control over the people and regular purges? I think we answered that. That he is not Yeah, going to we go don't anywhere. know. We really don't know. Okay. Right. Giridhar is a very intelligent guy. He's a mountaineer and he's right. So we'll take his question seriously. Since the US is focused on Taiwan, would Bharat not be less risky option for Z to inflict humiliation, especially to Modi, to ensure that we don't pose challenge to them? Let me answer this. Please see yesterday's video, which I did with General Raj Shukla. Okay. Please see the first 10 minutes, Giridhar. And this is what I have analyzed. Right? I have taken the one of the clips I showed here is Xi Jinping going for war, preparing for war. Yes. Then there's a article by I am forgetting, right? It is called uh, the Great Little War, right? Which China is preparing to fight. Okay, I've analyzed that, and they say that this war will be fought. But everyone thinks that China is going to fight a war with Taiwan, but as per this article and the analysis, it says no.
Yeah, it's a Rand publication. Sorry, it just slipped my mind. It's a Rand publication. As per this analysis, the China is likely to fight a war with India or Vietnam. And I analyzed as to why, what are the reasons why it will fight with India. So, Giridhar, have a look at it. Your question is not out of place, right? Okay, I think that's the end of the story, and we've finished all the questions. I thought we had a tremendous discussion. I would like to thank all of you for coming out with such good questions. And I would also like to thank General Rajiv Narayanan for coming out with such a great analysis. Today's analysis and yesterday's analysis are diametrically opposite to each other. But that's okay. We need to take a balanced view. We please have a look at yesterday's analysis by General Raj Shukla. It's again an outstanding analysis. Today is again an outstanding analysis. And as we go along, my aim is to get you the best analysis on China and become a China resource, so that tomorrow when you have a issue that you want to learn about China, come to this channel. And you will not get any other channel doing this professional analysis. Right? Your last word, Rajiv, and then we'll. Yeah, there are reports, a lot of write-ups which are coming out of the 5 or 6 wars that China needs to fight before 2050, and in that, uh, we are quite high in the priority of when he would like to fight us, Yeah, and Taiwan comes a little lower. lower. So it indicates. That's why I keep telling he's going to externalize, and you've got to be careful on the Careful edges. and ready on all counts. If our assessment goes wrong, he's going to Taiwan, that's okay. Okay. But Okay, we Girdhar, have to be careful. Can't keep our will, guard down. yeah, will Indian economy overtake China's economy till 2050? Anybody's guess. Well, let's see how it goes. But in the long run, as China's population declines and our population, comes the population dividend we gain, we will overtake it someday. Whether it's 2050, 60, 70, it will happen. Because what's happening in China is irreversible. Period. That is why, Right? if you look at the first slide which Sir had shown, demography was shown as a long term impact. Long-term impact, And that is the long term impact that is going to have on the economy of China. China. It will be one And of the I impacts of that is China and we'll economy. discuss this in detail. When I discuss the economics of China, Yes. I'm going to discuss with a good economist who's been in China and who knows the internal economy of China. I'm going to discuss with her, and that's with Dr. Sriparna Patak. Pathak. We'll discuss about it later. Right? Thanks a lot, Rajiv, for this great So thank you, exposition. Thanks a sir. lot for everyone. Always my Right? pleasure. And good evening and Jai Hind to all of you. Jai Hind, Jai Bharat.